till now, in this chapter, we have studied A, the different temperature scale, the different temperature scales, okay, and second is the expansions in solids, okay. So, temperature scales and expansion in solids, okay. So, expansion in solids are of three types. Hmm? As we have discussed in previous lecture, first type is called as a linear expansion. Second type is areal expansion, and third type is the volume expansion. So these are the three type of expansion in solids. Okay. Now linear expansion is given by equation LT is equal to L naught 1 plus alpha T. Okay. Now what is alpha here? So sir, alpha here is the coefficient of linear expansion. Okay. Now this coefficient of linear expansion, it tells us that how much the material will expand if we increase the temperature by 1 degree centigrade. So how much there will be the change in length of a wire or a rod if we increase or if we change the temperature by 1 degree centigrade. Okay, every material ka value of alpha is different. Okay, now the value of alpha is different. That means the different materials will expand differently under similar conditions. So there will be certain materials which expands more as compared to other material in the same conditions. Okay, so just be material ka alpha is high, its expansion will be more. Greater the value of alpha, greater will be the expansion. So alpha in short tells us that how much material will expand. There is another formula for this, which is alpha. Alpha ka formula. What happened here? Alpha is equal to LT minus L naught upon L naught T. Okay, so these were the equation for linear expansion. And then we had areal expansion also. क्या करूं मैं इसका? इसको भी क्यों छोड़ा लोग? या चलो ठीक है. So aerial expansion, okay, we studied the formula will be 80. कर ले टाइम है बस कर ले. 80 is equal to A naught 1 plus beta T. ऐसा ऐसा मैजिक नहीं सर, लिख के सब पलट जाओ, वाह अपने आप बोर्ड पे आ गया. अब आया भी नहीं, मेरा पोपट कर देगा ये, ठीक है ना. 1 प्लस बीटा टी. क्या हो रहा है? बट होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए वैसे. व्हाई इट इज लैगिंग टुडे? लैग हो नहीं रहा, कहते हैं अपडेट ले रहा है क्या ये? सिस्टम अंडर अपग्रेडेशन है क्या? शायद अपग्रेड कर रहा है अभी. वाईफाई ऑन, हाँ वाईफाई तो कनेक्टेड है. सिस्टम अपग्रेडेशन तो नहीं दिखा रहा है मेरे को.
चल ठीक है, कोई नहीं। अपडेट ले रहा होगा, मेरे को लग रहा है भी आज टाइम के बाद। ओके, so there was aerial and volume expansion. So aerial is also very similar to linear. AT is equal to A naught 1 plus beta T, where beta is the coefficient of aerial expansion. Same logic, more the value of beta, more will be the aerial expansion. And finally, we have volume Vt is equal to V naught 1 plus gamma T, and gamma is the coefficient of volume expansion. Now, this volume expansion, okay, this type of expansion is showed by liquids and gas also. So, volume expansion is the only type of expansion which is shown by all three states of matter, that is solids, liquid and gas. Now, liquids and gases, they do not show aerial and linear expansion. The reason is that the liquid and the gases do not have a particular shape. Okay, so for length and area, we need to have a particular shape. For any object to show linear and aerial expansion, it must have, एक मिनट ना. These were the different types of expansion. And as I was saying, volume expansion showed by all three states of matter, which is solid, liquids, and gases. All three states of matter shows volume expansion because the volume is the only physical quantity which is possessed by all three states of matter. Okay, chalo. Now, today we'll be discussing some of the applications of linear expansion. Some of the applications of linear expansion. Okay. And the first application is the or loss or gain in time of a simple pendulum. Of a simple pendulum. Okay. Now, what is the concept here? What is this loss or gain in time of a simple pendulum? What does it mean? Now, we know what a simple pendulum is. Okay, we have heard this before. A simple pendulum is actually just a heavy metallic sphere or a bob, we say, and let us say this bob is attached to a rigid support with the help of a metallic rod. Okay, so this bob is connected to the rigid support with the help of a metallic rod. Okay, so we have a metal rod, and with this metal rod there is a heavy, we can say, bob connected to it. Okay, in the older time we used to keep watch with the help of pendulum only. See, nowadays we have this mechanical watches, the watches that run on the batteries, the automatic batteries and all. Okay, but in the olden time we had this pendulum. Okay, and pendulum used to keep time. Now, if you look at the pendulum, it is basically made up of metal. Now, why will this pendulum lose or gain time? The idea is that during the summer season, the temperature of the surrounding is above than the normal, than the usual. It is more than the usual. And in winter, the temperature is slightly less than the average value. So because of the temperature change, the length of this pendulum will also vary. Because this pendulum ka base jo hai, it is made up of metal, and metal of course will show thermal expansion or thermal contraction based on the temperature.
So during summer time beta, so during summer time, during summer time, during summer time, the temperature, the temperature is higher than usual, higher than the average value. Now because the temperature is higher, so I can say that this metal will expand. बरोबर, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है ना, सो दैट मीन्स हीट विल बी मोर. सो मोर हीट होगा मतलब दिस पेंडुलम विल व्हाट, इट विल एक्सपांड. ओके, सो आई विल से दैट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, length of the pendulum increases, the pendulum expands, and since length increases, it will have the effect on its time period. Now what is time period? The time period is basically the time taken by the pendulum to complete one oscillation. So suppose if this is my pendulum, okay, and let's say it starts from here, let us say it starts from here, okay, and if I leave it, it will go like this, it will come back. So how much time it has taken to complete one motion, that time is defined as a time period. And the time period of simple pendulum is given by formula 2 pi under root of L by G. We have seen this formula before as well when we were deriving the relation between various physical quantity, the second application of dimensions. So from here we can clearly see that the time period is directly proportional to the square root of length. Now this implies that if the length changes, the time period also changes, and which is happening in this particular case, that usually in summer the temperature is higher than usual. That means this pendulum, which is made up of metal, it will absorb the heat, and because it is absorbing heat, the length of the pendulum will increase, it will undergo thermal expansion. And as the length increases beta, we can clearly see that the time period of the pendulum also increases. If the time period increases, it means what? मतलब हो क्या रहा है? It is taking more time. It is taking more time to complete the oscillation. So that means the pendulum slows down. समझा? पेंडुलम क्या हो गया बेटा? स्लो हो गया ना, बिकॉज नाउ इट इज टेकिंग मोर टाइम टू कंप्लीट द ऑसिलेशन. अरे कोई भी ऑब्जेक्ट हो बेटा, अगर इफ इट इज टेकिंग मोर टाइम टू कंप्लीट इट्स मोशन, मतलब वो क्या है? स्लो हो गया ना. लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम हियर और मैं यहां से यहां और यहां से यहां मूव कर रहा हूं ना, इफ आई टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दिस मोशन, मतलब मैं स्लोली मूव कर रहा हूं. So same thing goes for the pendulum also, na? Same thing goes for the pendulum also. So if pendulum is taking more time, the time period is increasing. That means pendulum is slowing down. Okay. तो pendulum अगर slow हो रहा है बेटा, now you guys tell me by your common sense, will it keep the correct time or no? No, it won't keep. Okay. Now from the correct time, वो टाइम से आगे रहेगा या पीछे रहेगा? पीछे. That means it will lose time. That means it will lose time. So there will be loss of time. Loss of time. मतलब if for an example, suppose the correct time at given moment is at 12 a.m. So that clock will not show 12. It will show like 11:55 or it will show 11:50 or it will show 11:57. मतलब पीछे रहेगा घड़ी. समझा आपने को ये? दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. ठीक है, फॉलो द चेन, फॉलो द चेन. चेन क्या है सर? ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर इज हायर देन यूजुअल. सिंस द टेम्परेचर इज हायर, the pendulum, which is made up of metal, it will absorb heat. By absorbing heat, it will undergo thermal expansion. Thermal expansion means the length of the pendulum increases. Length of the pendulum increases, the time period also increases because they both are directly proportional. The time period increases means the pendulum takes more time to complete the oscillation, but the pendulum will become slow. That means it will lose the time. अच्छा, अब मुझे बताओ विंटर में क्या होगा गाइस? एकदम उल्टा होगा ना. टेम्परेचर इज लोअर देन यूजुअल. अच्छा, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होगा? बिकॉज टेम्परेचर इज लो.
हाँ, टेम्परेचर इज लो, तो हम लोगों ने स्टडी किया ना बेटा, थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. अ मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. So during winter, it's a cooling time, so the length of pendulum will shrink, the length will decrease. The length decrease means time period decrease. टाइम पीरियड डिक्रीज मतलब मेरा क्लॉक फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है? सर फास्ट हो रहा है, अभी उसको कम टाइम लग रहा है, तो पेंडुलम फास्टन अप एंड लास्ट इट विल गेन टाइम. तो करेक्ट टाइम से वो आगे चलेगा, करेक्ट टाइम से वो आगे चलेगा. Okay, so this is what the concept is. Now, if we want to find out how much it has lost or gained time, कितना sir can we calculate it? Yes, of course we can calculate बेटा. For that थोड़ा सा आगे चलते. See, in the concept of linear expansion हमने क्या स्टडी किया था? लीनियर एक्सपेंशन में, लीनियर एक्सपेंशन वापस एक बार रिवाइज करो. लीनियर एक्सपेंशन, so the formula that we studied for alpha was LT minus L naught upon L naught into delta T. Let me call increase in temperature as delta T. Okay? अब मेरा जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो डेल्टा टी है. अब एल टी माइनस एल जीरो क्या हो गया मेरा? इंक्रीज इन लेंथ विच इज डेल्टा एल. लेट अस से एल नॉट की जगह मैं एल ले लेता हूं, मेरा इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा टी. सो देयरफॉर डेल्टा एल अपॉन एल will be equal to alpha times delta t. So this is the fractional increase in length of the body. Delta L by L will be equal to alpha times क्या होगा बेटा? T. I think ये हमने already last lecture में किया हुआ था. Nothing new, already done. Okay. Now बेटा, time period is equal to 2 pi under root of L by G. Okay, so from here I can say that the time period is directly proportional to square root of length. So therefore, अब मैंने एक एरर में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, एरर वाला, वो कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं. ठीक है, डेल्टा टी अपॉन टी, याद आ रहा है? रिलेटिव एरर वाला, डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ एल? एल का पावर इज हाफ, सो इट विल बी हाफ टाइम्स डेल्टा एल अपॉन क्या आएगा बेटा? एल. समझा कि नहीं? ओके, समझा? ये सेम हमने किया था. सो डेल्टा टी मतलब क्या होगा? चेंज इन टाइम. कैपिटल टी क्या होगा? अपना ओरिजिनल टाइम विल बी हाफ टाइम्स डेल्टा एल क्या होगा? अपना चेंज इन लेंथ अपॉन एल क्या रहेगा? अपना ओरिजिनल लेंथ. सो देयरफॉर डेल्टा एल बाय एल will be equal to 2 times of delta t by t. बरोबर? सही है. अब डेल्टा एल बाय अपने को पता है, इट इज अल्फा डेल्टा टी. सो फाइनली डेल्टा टी बाय टी विल बी इक्वल टू क्या रहेगा? हाफ टाइम्स अल्फा इनटू डेल्टा टी. सो दिस वे, विद दिस फॉर्मूला you can find out how much the pendulum loses or gain time. ओके, अब सपोज क्वेश्चन आया अपने को कि टाइम लॉस्ट और गेन इन 1 सेकेंड, सॉरी इन 1 डे, इन सेकेंड्स. अगर अपने को फाइंड आउट करना है बेटा हाउ मच पेंडुलम हैज लॉस्ट और गेन टाइम इन 1 डे, और भी सेकेंड में फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी सेकेंड्स इट हैज लॉस्ट इन 1 डे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो बहुत सिंपल है बेटा, उसके लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. Now, what is the time period? What is how many time we have in 1 day? We have 24 hours. In 24 hours, we have 24 into 3,600 seconds. Okay, 1 hour has 3,600 seconds. So in total, every day has 86,400 seconds. So each day has 86,400 seconds. हर दिन में. ओके, सो अब डेल्टा टी कैसे करेंगे? सो डेल्टा टी विल बी हाफ अल्फा डेल्टा टी विच इज इंक्रीज इन टेम्परेचर इनटू द टाइम पीरियड. एंड टाइम पीरियड 1 डे में कितना? 86,400. सो इट इज हाफ अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय 86,400 seconds. Okay, so with this formula you can find out how much time the pendulum has lost or gained in 1 day, and that too in seconds. Seconds में अगर अपने को find out करना है तो.
ओके, अगर आवर्स में फाइंड आउट करना है देन कीप द टाइम पीरियड एज 24 आवर्स। मतलब अगर अपने को ऑप्शंस में दिए हैं आवर्स कि हाउ मच टाइम, हाफ आवर, लाइक क्वार्टर ऑफ एन आवर, ओके, हाउ मच टाइम इट हैज लॉस्ट, अगर आर में दिया तो कीप टाइम पीरियड इन 24 आवर्स। बट इफ अपने को ऑप्शंस में दिया है सेकेंड्स, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 86,400 टू कन्वर्ट द टाइम पीरियड इनटू सेकेंड्स। So it's purely depend on our option what is given to us, ऑप्शन आवर्स में है या ऑप्शन सेकेंड्स में है। ओके, चलो इसके ऊपर एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन वाज देयर इज अ पेंडुलम क्लॉक, a pendulum clock consists of an iron rod connected to a small heavy bob. If it is designed to keep the correct time at 20 degrees Celsius, how fast or slow will it go in 24 hours at 40 degree centigrade. Alpha for iron is given as 1.2 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. So this is the question. Okay, so a pendulum clock consists of an iron rod connected to a small heavy bob. If it is designed to keep the correct time at 20 degree, how fast or will it go in 24 hours at 40 degree? Okay, so usually it keeps a correct time at 20 degree. So if the temperature goes above 20 or lower than 20, then the time will change. Okay, it will not keep the correct time. The correct time is kept only at 20 degree. Now, if the temperature is at 40, first of all, you tell me, will it fast or will it slow? Will the time period will become fast or it will become slow at 40 degree? You tell me. It will become slow. Why? The concept we just discussed here, that as the temperature goes higher, the length of pendulum increases, the time period increases and the pendulum slows down. Okay, so answer यहाँ पे first type का answer क्या था? How fast or slow will it go in 24 hours at 40 degree? So sir, it will slow down. By how much time it will slow down? Sir, we know the formula directly that the delta T upon T is half alpha into delta T. So that is half. Alpha ka value is 1.2 10 to the power minus 6. And how much the temperature has increased? Sir, it keeps correct time at 20 and now they are asking at 40 degrees. So it is 40 minus 20. Okay, 40 minus 20. So this becomes 0.6 10 to the power minus 6 and again this is multiplied by 20. So this is 12 into 10 raised to power minus 6. So therefore delta T will be equal to 12 into 10 raised to power minus 6 into T. So it is 12 into 10 raised to power minus 6 into 86,400 seconds. Okay, 86,400 seconds. So the answer will somewhere be 1.0368 seconds. This is the answer. So due to the increase in length of the pendulum clock, each day it will slows down by 1 second. So every day that clock will slow by how much? 1 second. It will lose 1 second every day. मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है.
Okay, so over the whole year, it will lose like roughly 365 seconds. Okay, like roughly 6 to 7 minutes. बरोबर ना, 6 minutes के अप्रॉक्स 6 to 7, समवेयर बिटवीन 6 to 7 minutes इट विल लूज एवरी ईयर. मतलब हर साल उसका टाइम इतने से चेंज होगा इफ वी कीप द टेम्परेचर एट 40 ओनली. समझा आपने? कोई सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो सीधा सीधा अपने को फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टी बाई टी इज हाफ अल्फा इंटू डेल्टा टी. ओके, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 86,400 से एज यू कैन सी आई हैव मल्टीप्लाइड इट एंड देन आई गॉट माय आंसर इन सेकंड्स. सिंपल. सो दिस मच सेकंड इट लॉस्ट इन 1 day. Okay, in 24 hours. Okay, now students, there is one more application of linear expansion, and that concept is called as thermal stress. That concept is called as thermal stress. Thermal stress. Now what is thermal stress? ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट्स बोलते हैं सर होमवर्क ज्यादा मत दो, हम लोग को स्ट्रेस आ जाता है. बरोबर, दिस इज द कॉमन थिंग वी से, सर बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का. बरोबर. सो व्हाट इज दिस, वेयर दिस वर्ड स्ट्रेस केम फ्रॉम? ओके, ये स्ट्रेस वर्ड आया कहां से? ये बेसिकली वर्ड आया फिजिक्स से. ओके, नाउ स्ट्रेस का फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तो आइडेंटिफाई, सर तो देखा देखा लग, नथिंग न्यू. ओके, कुछ नया नहीं है. ओके, क्या है स्ट्रेस का फॉर्मूला? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है बेसिकली? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. हाँ, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. हैव यू सीन दिस? प्रेशर, एग्जैक्टली सर, ये तो प्रेशर का फॉर्मूला है. आप बेवकूफ बना रहे हो सर, ये प्रेशर बोल के आप स्ट्रेस पढ़ा रहे हो मेरे को, जबरदस्ती फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर. नहीं भाई, बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, सच में ये मम्मी कसम ये स्ट्रेस है. स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. यस, द फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर और एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रेशर, आई एग्री. लेकिन इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं. अच्छा, इसको स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? व्हाट इज दिस वर्ड स्ट्रेस? बेसिकली क्या होता है? Students, there is another chapter in physics which is called as mechanical properties of solids. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Thermal properties of solid. हाँ सर, नाम कितना सिमिलर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. और नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो इन दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ द मटेरियल विल बिहेव इफ वी पुट इट इनटू द मैकेनिकल स्ट्रेस. सिंपल टर्म्स में, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर अपन फोर्स लगाएंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा. सिंपल. वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है. तो वहीं पे आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे स्ट्रेस का, विच इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. समझा? हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया. यस, उसको ही प्रेशर बोलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में उसको स्ट्रेस बोलते हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल राइट नाउ, वरना फिर वो अलग चैप्टर ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो अभी के लिए वो स्ट्रेस कैसे आया, क्यों आया, फॉरगेट इट. हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में. But here you just take it as a stress is nothing but force upon area. So what is this thermal stress? What do you mean by thermal stress? So basically the stress, the stress, the stress developed in a rod due to heating is called thermal stress. Is called as thermal stress. So the stress that is developed in a rod due to heating is called as the thermal stress. तो हीटिंग के वजह से उस पे जो फोर्स डेवलप होगा उसके अंदर, उसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस बुलाते हैं. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा. सपोज देयर आर टू रिजिड सपोर्ट हियर. कौन है भाई? सपोज देयर आर टू रिजिड सपोर्ट्स. ठीक है, और अगेन कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूंगा, कॉमन सेंस से, एकदम कॉमन सेंस वाला आंसर अपने को आएगा. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट कियर ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है. जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, वही बता रहा हूँ, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. अपने आप दिल से आवाज आएगी, करेक्ट आंसर दिल से आएगी. तो कभी कभार दिल की भी सुनने का, हमेशा दिमाग के नहीं सुनने का. अंदर से पूछो, अपने आप से पूछो, आंसर यू विल गेट इट. ठीक है, क्या हो गया यार, कुछ ज्यादा ही मैं फ्लो में बोल दिया क्या? तो कुछ ज्यादा ही बोल दी.
ये देखो, सपोज हमारे पास यहां पर एक रॉड है, ठीक है, ठीक है, सपोज दिस इज अ रॉड, कलर चेंज करता हूँ, बढ़िया कलर है, ये रॉड है अपने पास, ठीक है, एंड देयर आर टू रिजिड सपोर्ट। लेट अस से इस रॉड का इनिशियल लेंथ इज एल, इनिशियल लेंथ इज एल। हाँ, अब तुम लोग मुझे बताओ, सिंपल, इस रॉड को मैं हीट करूंगा, क्या होगा? लेट अस से इसके पास सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन है, ओके, सिंप्लिसिटी के लिए ये सिर्फ लीनियरली एक्सपैंड कर सकता है, इसका एरिया एक्सपैंड नहीं होगा, सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए बोलो भी क्या होगा? दोनों साइड पुश करेगा, और पुश करेगा मतलब एक्चुअल में क्या होगा? तो बेसिकली क्या हो रहा है, वेरी गुड पॉइंट बेटा, वेरी गुड पॉइंट, बेसिकली क्या हो रहा है, इफ आई हीट दिस इट विल ट्राई टू एक्सपैंड, it will try to expand. So उसकी property है, the metal will always expand on heating, it tries to expand, but these rigid supports, they will not let this rod expand. So because of that, both these rigid supports, they will start exerting force on the rod. अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है, so rod is trying to expand, it is like यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ is into the picture. For every action there is always equal and opposite reaction. So rod is trying to expand. So rod क्या करेगा? So the rod will exert pressure on the rigid support in outward direction. समझा? Force exerted by rod. तो ये rigid support क्या बोलेगा? भाई मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, for every action there is always equal and opposite reaction. So this rigid support will always or will also exert an inward force on the rod, equal and opposite. Now this force is trying to compress the rod. Yes, these forces, ठीक है, इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, इसका काम हो गया, जा भाई तेरा काम हो गया, ठीक है। Now these forces are trying to compress the rod. So a compressive force is developed inside the rod, and this compressive force came into existence after heating. Before heating तो था नहीं. So force that is being exerted per unit area due to heating is called as thermal stress. Simple. ये हमारा थर्मल स्ट्रेस है, समझा अपने को, ठीक है। सो एक कंप्रेसिव फोर्स इसके ऊपर एक्ट होता है, एंड दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। अब बेटा जो स्ट्रेस है अपना, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, हाउ मच फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, अब ये जो मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूं, अगेन यू विल स्टडी दिस फॉर्मूला इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। स्ट्रेस का एक कजिन भाई है जिसको हम लोग बुलाते हैं स्ट्रेन, वी कॉल इट एज स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हाउ मच लेंथ हैज चेंज्ड एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, और इन शॉर्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, बाय व्हाट फ्रैक्शन द लेंथ हैज चेंज्ड. So that fractional change in length is called as strain. Again, in detail, in depth, you will study this in the mechanical properties of solid. अभी के लिए just focus yourself कि अच्छा ये एक formula है, ये एक formula है. Now students, whenever we take the ratio of stress upon strain, we get a constant value, और उस constant value को we call it as y, and the name is Young's modulus, and the name is Young's modulus, the name is Young's modulus. So whenever you take the ratio of stress and the strain, you always end up getting a constant value, and that constant value is called as Young's modulus. Okay, chalo. Ab we know, no students, we know from thermal expansion, we know from thermal expansion that change in length upon original length is alpha times क्या होगा बेटा, delta t.
Now change in length upon original length is also called as beta strain. So therefore strain is nothing but the alpha times, sorry, delta L by L, which is also alpha times delta T. Okay, so beta stress क्या होगा? So therefore my thermal stress will be Young modulus into strain. सिंपल ना बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन y होगा, तो स्ट्रेस क्या होगा? y इंटू स्ट्रेन. ठीक है, तो स्ट्रेन क्या है सर मेरा? सर स्ट्रेन है अल्फा टाइम्स डेल्टा टी. सो y अल्फा डेल्टा टी विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ थर्मल स्ट्रेस. ये फॉर्मूला बन गया थर्मल स्ट्रेस का बेटा. ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन बेसिकली चेंज इन लेंथ, हाउ मच लेंथ हैज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. Okay, thermal expansion say we know delta L upon L is alpha times delta T. So therefore my strain becomes alpha times delta T. Now the ratio of stress and strain is a constant value, and that constant value is called as Young's modulus. So therefore my stress will be y times of strain. So it is y times of strain. So it is y times of alpha into delta T. So with this formula, you can find out what is the thermal stress produced in a rod due to the thermal expansion. सो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ही रॉड के अंदर एक कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंप्रेसिव फोर्स देयर इज अ थर्मल स्ट्रेस बीइंग डेवलप्ड इनसाइड द रॉड, एंड दैट इज गिवन बाय y अल्फा डेल्टा t. एंड बच्चा ये जो y का वैल्यू है, इट विल बी गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम. इट इज नॉट समथिंग यू हैव टू मेमोराइज. इट विल बी प्रोवाइडेड एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. Okay, basically Young's modulus पता है क्या है? It is a number. It's a number which tells us how much stress a material can handle before breaking out. मतलब मेरे पास एक वायर है, उस वायर पे मैं कितना लोड लगा सकता हूं बिफोर इट ब्रेक्स डाउन. तो द लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल वो यंग्स मॉडुलस देता है, कितना लोड वो हैंडल कर सकता है, वो यंग्स मॉडुलस वैल्यू देगा अपने को. अगेन इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए द वाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. तो इंजीनियर्स वाई को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं. Okay, it tells us the load bearing capacity of a wire, how or a thick wire, that how much load it can handle. Okay, तो ये वैल्यू आपको दिया रहेगा स्टूडेंट्स. तो इसमें कुछ अपने को याद करने वाली चीज नहीं है. नाउ लेट मी सॉल्व another problem based on that. Okay, see I have it where it is. टाइम पे नहीं मिलता है कुछ. कहाँ गया भाई? टाइम पे क्यों नहीं मिलता है? एक क्वेश्चन है. अ स्टील वायर a steel wire of 0.5 millimeter square cross sectional area is held between two rigid support. ओके, ठीक है. if the wire is just taut or fixed at 20 degree, determine the tension when temperature falls to 0 degree.
Okay, alpha of steel is given as 1.2 10 to the power minus 5 per degree centigrade, and Young's modulus for the steel is given as 2 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. Hmm? टेंशन पूछा, हाउ मच टेंशन विल बी डेवलप. टेंशन मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग अस हाउ मच फोर्स is being acted on that rod. So first of all, I will calculate what is thermal stress. तो थर्मल स्ट्रेस क्या है? Y अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है. सो थर्मल स्ट्रेस इज Y अल्फा इंटू डेल्टा टी. सो थर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. Force upon area is Y alpha delta T. So the force that is developed will be YA alpha into delta T. Very very simple. अब Y का वैल्यू कितना है सर? 2 10 रेज टू 11. सर A कितना दिया है? 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर. So it is half into 10 raised to power minus 6 meter square. Alpha is 1.2, or I'll just write it at 12 into 10 raised to power minus 6. Okay, and delta T is basically 20 degree, because this is 0, this is 20, the difference is simply 20. अब सिंपल दिख रहा है यार अपने को, ठीक है. तो ये 2 और 2 उड़ा दो, खत्म हो गया. सो 12 into 20, 12 2 are 24, 240 आएगा आंसर. सो दिस इज 240, दिस इज 240. पावर क्या होगा अपना? माइनस 6 एंड माइनस 6 इज माइनस 12 एंड प्लस 11. सो 10 रेज टू पावर माइनस 1 आ जाएगा ये. सो 240 10 रेज टू पावर माइनस 1 मतलब कितना फोर्स जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा सर? 24 न्यूटन का. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर. So 24 Newton का compressive force or the tension will be developed in that steel wire. ठीक है, तो सिंपल सा है, सीधा सीधा अपने को अप्लाई करना है. You just have to remember the formula. ठीक है, चलो एक थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको थोड़ा जगाने के लिए, तुम लोग सो गए हो न्यूमेरिकल में, तुम लोग का एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं मैं. इधर आओ, देखो देखो कितना तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझे हो. देखे आईआईटी जेई चेक करते जरा. आओ, जागो जागो, बढ़िया क्वेश्चन है, जागो. कीप योरसेल्फ अवेक नाउ. चलो, ये दिस इज, हाँ बंद कर दे बेटा. हाँ, suppose we have a bimetallic strip. Okay, the name is bimetallic strip. Simple. Bimetallic strip metal. There is a strip. It is made up of two metals. Okay. There is one metal on the left, another metal is on the right. दोनों अलग अलग मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल्स. ओके, इसका अल्फा, इस मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा 1, एंड इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा 2. Coefficient of linear alpha 1, coefficient linear alpha 2, and I will say alpha 1 is greater than alpha 2, greater than alpha 2. Okay, this is given, alpha 1 is greater than alpha 2. सोचो, टाइम दे रहा हूं तुम लोग को. Think. Now if I heat this strip, if I heat this strip, what will happen? It will bend. How? कैसे? मतलब like alpha 1 बाहर के साइड होगा. What is this way of showing यार? हाँ, अभी बड़े हो गए हम लोग सर, ऐसा होगा. कॉनकेव साइड में अल्फा 2 है, और बस. श्योर? आंसर ही नहीं था फिर भी श्योर है? बगैर आंसर दिए श्योर है? उसके आंसर में मुझे श्योरिटी है सर. So see, when you start heating this bimetallic strip, what happens that since alpha 1 is greater than alpha 2,
So the expansion of the metal which is on the left hand side will be more than the expansion of the solid which is there on the right hand side. In short, इसका expansion ज़्यादा होगा. So this will expand more as compared to this metal which will expand less. So the strip will bend, and it will bend in such a way that this alpha 1 will be on the outer side and the alpha 2 will be in the inner side. And why alpha 1 is in the outer side? Because the alpha 1 bahar hai, so it will have a larger radius. So therefore this bimetallic strip, okay, will bend like this. Okay, it will bend like this. Okay, ऐसा कुछ होगा ये. And 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 as I said, outer side पे कौन रहेगा बेटा? Outer side पे will be alpha 1 and inner side पे कौन रहेगा बेटा? Alpha 2. Okay, क्योंकि इसका radius will be more, इसका length will be more as compared to ये. Like for an example, अगर एक circle है बेटा मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे दो सर्कल ले लिए मैंने. सेंटर से अगर मैं देखूं, ठीक है, सेंटर से अगर मैं देखूं, क्लियरली सी की जो आउटर एज वाला होगा उसका लेंथ ज्यादा है, उसका आर्क लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनर वन. बस सेम चीज यहां पे भी हो रहा है बेटा. ठीक है, ये आर्क लेंथ इज मोर एज कंपेयर टू दिस, सो दिस आर्क लेंथ इज मोर एज कंपेयर टू द इनर वन. सो बायोमेटालिक स्ट्रिप ऐसा अपना बेंड होगा. अच्छा, अगर मैं केस को रिवर्स करूं बेटा, अगर मैं केस को रिवर्स करूं, सपोज अल्फा 2 बिकम्स ग्रेटर देन अल्फा 1, तो क्या होगा? Then again alpha 2 will be outside and alpha 1 will be inside. And if they both are equal, then straight, just expand ऐसा linearly, line by line. Okay, so these are the different cases. ये अपने theoretical questions हैं. ठीक है, चलो एक और theoretical question. चलो let's see. Easily कर लिया ना, थोड़ा difficult करना पड़ेगा. अंडर एस्टिमेट गई आप क्वेश्चन देखो. ओके, चलो ए है, बी है, ठीक है, मैं इसको हीट कर रहा हूँ. लीनियर एक्सपेंशन है. The gap AB will increase or decrease. ओके, ऐसा तो नहीं कि वो स्ट्रेट वाले को हिट किया तो कर्व हुआ, तो कर्व वाले को हिट करूंगे स्ट्रेट, ऐसा वो लॉजिक नहीं है ना. वो प्लीज मत करो, वो लॉजिक नहीं है यहाँ पे. ठीक है, यस रज. वेल, सो फॉर यू गाइस, लाइक जो भी इंक्रीज बोल रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज, तो गैप विल इंक्रीज. तो सेइंग थर्मल एक्सपेंशन होगा, सो इट विल एक्सपैंड. एंड सम ऑफ यू सेइंग सो बिकॉज़ थर्मल एक्सपेंशन होगा, सो इट विल गो लाइक दिस. ये थॉट है ना, ऐसा थर्मल एक्सपेंशन, दिस विल, द थिंग विल हैपन हियर. सी बेसिकली एक्सपेंशन में ना एक सिंपल सा रूल है, दे रहा हूं मैं, कभी कंफ्यूज नहीं हो, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है ना आराम से सॉल्व कर लोगे. सिंपल रूल है एक्सपेंशन का. यू टेक एनी 2 points on the body, you take any 2 points on the body which is undergoing thermal expansion. After thermal expansion, you will always observe that the distance between 2 points will always increase. Simple rule है expansion का. Any object, any body which is undergoing thermal expansion, if you take two random points on that body, the distance between that two body will always increase during the expansion, and of course it will decrease during the contraction. सिंपल रूल है. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ओके सर, सो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, अगर मैं कहीं भी दो रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, ये और ये, and now if I heat it, so now the distance between them should always increase. So that means they will move apart from each other. That means the gap AB increases. Simple logic, कभी कंफ्यूज नहीं होगी. Anybody, 2 points, the distance will always increase. खत्म.
That is expansion. That is the definition of expansion, beta. That is the definition of expansion, that if any body is increasing, any object is increasing, the distance between any 2 points on that object has to increase with temperature. Otherwise वो expansion नहीं है. Otherwise वो expansion नहीं है. Expansion का मतलब क्या हो रहा है? Distance increase होगा. Any 2 points, कोई भी 2 points पे ले लो, हमेशा increase होगा. Provided it is an isotropic material. हाँ आ रहा है उसके बराबर. वही तुम लोग expansion का वो खत्म हो गया, isotropic भी आ रहा है. Okay, so the gap will increase. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एक और क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है मुझे. ऐसा रॉड है, ठीक है, तो ये तो मैं थोड़ा सा इसको थिक कर देता हूँ ना, लगेगा रॉड है. लग रहा है ना बढ़िया से. एंगल बिटवीन देम अल्फा, ठीक है. देन देयर इज सर्कुलर शेप ऐसे, and there is a small line into it. Then there is another circle. Okay, this another circle. Okay, there is a circle inside it. Okay, perfect. और ये तो कर लिया, ठीक है. Now, 3 statement. पहला statement. Sorry. First statement. First statement. The angle alpha will not change. Will not change. Statement 2. The length of line will decrease. And the third statement. The radius of inner hole will decrease. ठीक है. Now, all 3 objects are being heated. ठीक है, तीनों को हम लोग हीट कर रहे हैं. Now you guys tell me which statement is true and which statement is false. First wala is true, second wala is false, and third is also false. Correct answer. So why false? Sir, of course expansion हो रहा है तो length will always increase. हर जगह से increase होगा. It is a हर जगह से uniformly the size of this body will increase. Same here, the size will increase uniformly. So the radius will also increase. Simple concept. What about this? Sir, the linear expansion है, so it have no role in the angle. So ये दोनों bodies ऐसे ही increase करेंगी. The length ऐसा increase होगा. Angle between them will not increase. Okay, because linear expansion हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. So this is true, this is false, and this is also false. Second, क्योंकि बेटा expansion हो रहा है ना. So if you expand, so ये जो length होगा ये भी थोड़ा सा expand होगा. जैसे मैंने बोला ना, if you take any 2 points on the material or the body, because of thermal expansion, the distance between them will always increase. नहीं, बट ऐसा ही बढ़ेगा ना, सर्कल के लिए ये भी तो बढ़ेगा ना. यूनिफॉर्मली सर्कल हर जगह से इंक्रीज होगा ना. यूनिफॉर्मली, अगर सिर्फ ऐसा नहीं बढ़ेगा सर्कल, अदरवाइज ये एलिप्स हो जाएगा ना बेटा. परफेक्ट, समझा. तो इट हैज टू इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम एवरीवेयर. So it will increase from here also and here also. So if it increases, then the length will also increase. Or the rule that I gave, na, simple on that basis of the rule, I can also say that if I choose any 2 points on the body, because of expansion, the distance will always increase between them. So I chose that 2 points on the line only.
So the distance will always, because of the expansion. Simple logic. Okay. And same thing here also, if I choose one point here, one point here, and because of expansion, distance between 2 points should increase. So therefore, the diameter of this inner circle should increase. The diameter increase, that means radius should also increase. So this is false, and this is true. ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, फिर सन देता तुम लोग को मैं एक करके। एप्लीकेशन हो गया लीनियर एक्सपेंशन का, बाकी आइसोट्रोपिक वाला मैं आप लोग को इसके बाद बता देता हूँ मैं, व्हाट इज आइसोट्रोपिक का स्टफ। ओके, नाउ विल कम टू द वॉल्यूम के कुछ सम्स एंड देन वी आर डन विद एक्सपेंशन। डन, नेक्स्ट करें। तो नहीं हो रहा है, नेक्स्ट।